Hi dear students, in this class we are discussing about the inverse trigonometry part 4. So in this section we are discussing about the simplest form, prove that this equal to this, and simplest form, find the simplest form of this, and we have to prove like this. So we have to know the some formulas, so then only you can solve this, prove that formulas and simplest form, and this condition you have to know whether the x is belongs to which value, and you should be know the formulas of all trigonometric function, then only you can solve the simplest form as well as prove that in this section. This is very important for 3 marks also. In competitive and in differentiation chapter we can see the differentiation y is equal to this, then you have to take the simplest form of this, then only you can find the dy by dx. So that will be discussed. So now you have to remember the all the formula, whatever the sine 2 theta, cos 2 theta, tan 2 theta, sine 2 theta in terms of cos 2 theta, and in terms of tan theta. Cos 2 theta is in terms of sine theta, cos theta, tan theta, sine 3 theta, cos 3 theta. All formulas we need to know, because so some various examples are there, and this is very important example. Every year they will ask 2 marks for in any 3 exams. So they will ask this for a 2 marks, and this is also very important, and this is also very simple questions, and this is also a very important question. 3 marks के लिए आया था, and this is also a you have to means either simplest form में क्या होता है, तो which value you have to substitute for the x, and for which value the value is changing for the x, that only you need to know. So when you are get that value means when you know the perfect value of that x, means whatever the formula is there, then only you can get the all formulas. Clear? So now we can see one by one. So first, before to discuss about this, we have to write some formulas. So what are the formulas? You can have to note it down. So the values are there here. Sine 2 theta. What is the sine 2 theta formula? 2 sine theta into cos theta, and cos 2 theta formula क्या है? 2 cos square theta minus 1 minus 2 sin square theta, 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta, as well as cos square theta minus sin square theta. Here so cos 2 theta है तो इधर theta आएगा, either theta, if it is theta then it will be a theta by 2, if it is theta by 2 then it will be a theta by 4, everything will be same. इधर 2 आएगा, इधर 1 minus 2 sin square ही आएगा, 1 minus tan square, 1 plus tan square वही आएगा. But the main difference is what? 2 theta. Here it is 2 theta, half of 2 theta is theta, then only you have to take that half of that. 3 theta is there, then you have to take 3 theta by 2. 4 theta is there, 4 theta by 2. Whatever the value is there, you have to take a half of that value. You will get the this formula. Clear? And what about the sine 2 theta in terms of tan theta? That is nothing but 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. Clear? And what about the tan 2 theta formula? So tan 2 theta formula is 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Clear? So many formulas are there, and 2 golden formulas are there. So these are the 2 golden formulas. What are those golden formulas? 1 minus cos 2 theta, ये क्या आएगा? 2 sin square theta आएगा. If it is only 1 minus cos theta, then so 1 minus cos theta is nothing but 2 sin square theta by 2. I already told you that 1 minus cos theta, 1 minus cos 2 theta in differentiation also. So whenever you can differentiate any function, that will be what? That is the given function. 1 minus cos theta is nothing but 2 sin square theta by 2. Whatever the value is here, it is theta, you have to take the half of that, then it will be a theta by 2. So what about the 1 plus cos 2 theta? So 1 plus cos 2 theta is nothing but 2 cos square theta. If 1 plus is there, then cos will be cos. 1 minus is there, then cos will be sin. That you need to remember. So सिर्फ इधर cos theta है तो क्या हो जाएगा? 1 plus cos theta is there, then it will be 2 cos square theta by 2. Sir, if theta by 2 इधर है तो 1 plus cos theta by 2 is there, then 2 cos square theta by 4 करना पड़ेगा इधर, एंड 1 माइनस cos थीटा बाई 2 है तो सर 2 sin square थीटा बाई 4, थीटा बाई 2 को वापस डिवाइड बाई 2 किया तो क्या हो जाएगा? थीटा बाई 4 हो जाएगा. सो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर द ऑल दिस फॉर्मूलाज. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली यू कैन सॉल्व. So 2 cos square theta minus 1, and you need to know the reciprocals. And what are the reciprocals are there? Sin theta is equal to 1 by cosec theta, and cos theta is equal to 1 by sec theta, and tan theta equal to 1 by
cot theta. Okay, so I'll not waste your time. So to prepare the formula, so just you have to remind these all formulas. So after that you can solve the examples. So what are the examples are there? Prove that 2 tan inverse x is equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. Just consider. So what is the consideration? The consideration RHS. What is that? Tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. You need to remember this one. कैसे remember करते हैं आपको पता चलेगा. So either 2x divided by 1 minus x square. Which form it is? 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. तो x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? x का वैल्यू x is equal to tan theta. Then only will get a 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta आएगा. सर x को तो वैल्यू चेंज किया tan theta, तो theta का वैल्यू भी चाहिए ना at the end. That is nothing but theta equal to. So either दोनों साइड tan inverse अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? Tan inverse of tan theta, the first property, that is tan inverse x. So if theta x equal to tan theta, then theta equal to tan inverse x. It will be there. Now the first equation becomes tan inverse of 2x divided by 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Clear? Already you know. What is you know? We know that 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta is nothing but tan 2 theta. Yes or no? Then this value becomes tan inverse of tan 2 theta. So already you know the properties of tan inverse of tan theta will be tan inverse of tan dabba or tan of tan inverse dabba. Answer क्या आएगा? dabba ही आएगा. So what is there in the value in the dabba? That will be the 2 theta. So then what is the value of theta here? The theta value will be tan inverse x, 2 tan inverse of x. तो आप RHS लिया था तो LHS आया. तो hence proved क्या है? 2 tan inverse x is equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. This we have proved here. Clear? Just you need to know what we need to substitute. आफ्टर सब्स्टिट्यूट करने के बाद फार्मूला आते क्या नहीं वही चेक करना पड़ेगा, और फार्मूला आने के लिए क्या कैंसिल करना पड़ेगा वो सोचना है बस. सो इधर देखो 2 tan inverse x इक्वल टू ये फार्मूला है. सर ये क्या है? 2 tan inverse x का कितना फार्मूला है? बहुत है. सो इधर देखो साइन इनवर्स ऑफ ये वैल्यू कंसीडर करो आप. तो कंसीडर करने के बाद क्या हो जाएगा? 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज आवर गिवन वैल्यू. सो इधर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप? अभी देखे ना हम 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. वो फार्मूला आप इधर अप्लाई किया तो x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? द x वैल्यू विल बी, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट फॉर tan थीटा. सो s वैल्यू विल बी हियर x इज इक्वल टू tan थीटा. देन थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा वैल्यू विल बी tan inverse x, that you know already. x equal to tan theta है तो theta equal to tan inverse x. And sin inverse of 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. So here the 1 plus tan square theta. ये property समझे क्या नहीं आपको? Tan inverse of tan theta is nothing but tan inverse of tan x will be x whenever the x belongs to this range. And sin inverse of 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. We know that sin 2 theta formula, 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. This we have to write here. So we know that formula. Then it will be a sin inverse of sin 2 theta. So already we know that sin inverse of sin theta will be theta. So now sin inverse of sin 2 theta क्या आएगा? 2 theta. So what is the value of theta? Tan inverse x. यही क्या है हमारा? LHS. क्लियर? तो LHS इक्वल टू RHS. Hence proved 2 tan inverse x equal to sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. These two are now so simple examples. And now they have to consider again 2 tan inverse x. Clear? So you have to consider again RHS cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square. ये क्या है सर? कितना फॉर्मूला है? तो अभी तो देखिए ना आप 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला आएगा tan 2 थीटा और cos 2 थीटा, cos 2 थीटा. सो वी नो that we have to substitute the values. What are those values? X equal to tan theta. You have to replace the value. Whenever you are replacing x value, then you have to take the tan theta value also, theta.
A tan inverse x. Clear? So this will be a theta value. So now substitute this value in this here. So cos inverse of 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Already you know 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta is nothing but cos 2 theta. You can write here. So we know that 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta is equal to cos 2 theta. So we have to write the replace this value. So cos inverse of cos 2 theta. So already you know the cos inverse of cos theta is nothing but theta by the property 1. So what is the value of theta? By using the 1, that will be a 2 tan inverse x. This will be a LHS. Therefore LHS equal to RHS. LHS means what? 2 tan inverse x. RHS means what? 1 minus x squared cos inverse of 1 minus. Consider LHS लिखना बस इधर. Consider RHS. So whenever you are considering RHS, you have to prove LHS. Whenever you are considering LHS, then you have to prove the RHS. सर ये फार्मूला कौन सा है? इधर consider LHS. अभी इधर consider LHS किए तो क्या हो जाएगा? देखो इधर sin inverse of 2x into square root of 1 minus x square. सर आप बोले थे ना ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं इधर, तो क्या करना पड़ेगा? सो इधर तो देखो ना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज देयर एंड यू नो द वन फॉर्मूला. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? दैट मीन्स नथिंग बट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड ये cos स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. देन sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos square theta हो जाएगा. Then sin theta equal to square root of 1 minus cos square theta. Then what will be the cos theta? That is also same square root of 1 minus sin square theta. Clear? So it depends on the range where the theta belongs to. So very simple है ना बाबा. एक फार्मूला से 4 फार्मूला निकल सकते हैं आप. sin theta, cos theta, sin square theta plus cos square theta. And also you have to know the identity formulas all. 1 plus tan square theta is nothing but secant square theta. तो only tan square theta आया तो क्या हो जाएगा? Secant square theta minus 1. You have to remember 1 plus cos square theta equal to cosec square theta. Clear? So you have to remember these all formulas. Now you have to substitute here. You can substitute x equal to sin theta also and cos theta also. But what you need to prove here? 2 sin inverse x you need to prove. Then you definitely substitute the value x equal to sin theta. So substitute x is equal to sin theta. Then what will be the theta? Theta will be the sin inverse x. Clear? So now you have to substitute the values. तो a become क्या होगा? sin inverse of 2 sin theta square root of 1 minus sin square theta. Square root of 1 minus sin square theta is nothing but you know that is cos square theta. This is 1 minute. This will be the sin theta 2 sin theta, and what is the square root of 1 minus sin square theta? That is square root of cos square theta because of sin square theta plus cos square theta equal to 1. So now square root of cos square theta, square and square root cancel, sin inverse of 2 sin theta into cos theta. And one more thing formula you know na? What is that formula? Sin 2 theta formula. We know that sin 2 theta equal to so tan theta into cos theta. Then it becomes what? Sin inverse of sin 2 theta. Our equation becomes sin inverse of sin 2 theta. Sin inverse of sin 2 theta is nothing but theta. What is the theta value here? 2 theta. And what is the theta value here? The theta value is sin inverse x. It becomes what? 2 sin inverse x. Hence prove sin inverse of 2x into square root of 1 minus x square equal to 2 sin inverse x. Hence proved. It is clear. I hope everything is clear. Whenever the range is belongs to minus 1 by root 2 to 1 by root 2, you have to prove 2 sin inverse x. Otherwise, you have to prove it is a 2 cos inverse x. There are 2 examples, and this is also a previous year question. Very important. Clear? So not mentioned here, but in my notes will be there. And next, here 3 sin inverse x पूछे तो 3 theta का फॉर्मूला. तो इधर 3 cos इनवर्स x पूछे तो cos 3 थीटा का फार्मूला. देन व्हाट इज द sin 3 थीटा फार्मूला? इधर ही दिए वो 3 sin थीटा 4 sin क्यूब थीटा. इधर 4 cos क्यूब थीटा 3 cos थीटा. ऐसे कैसे सर? अरे देखो ना, तो इधर 3 sin थीटा माइनस
4 साइन क्यूब थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन 3 थीटा। यू नीड टू रिमेंबर दिस। एंड इधर भी क्या आएगा, इधर भी सेम, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, सॉरी 3 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला किसका, कॉस 3 थीटा का। व्हेन यू नो द दीज टू वैल्यूज देन यू कैन डू इट। क्लियर? सो जस्ट यू हैव टू सॉल्व वन बाय वन। क्लियर? So now consider the RHS. Consider the RHS. So consider sine inverse of 3x minus 4x cube. Clear? What you need to substitute here? Substitute x is equal to sine theta, theta equal to sine inverse x. This is our range value. Clear? So now if you are substitute these values, sine inverse of 3 sine theta minus 4 sine cube theta. This is our given value. And we know that, what you know, sine 3 theta formula. What is that? 3 sine theta minus 4 sine cube theta. ये वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू साइन 3 थीटा हो जाएगा। सो नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा हुआ। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा विल बी 3 थीटा, दिस विल बी आएगा। सो व्हाट इज थीटा, साइन इनवर्स एक्स। ये क्या है आपका, एल एच एस। तो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, इट मीन्स व्हाट, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इट इज क्लियर, हेंस इजी है। क्लियर? सो ये आप ही कर सकते हैं। इधर इधर क्या कर सकते हैं आप, सो कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। सो आप इधर x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कॉस थीटा, एंड व्हाट विल बी द थीटा, cos inverse of x. I hope you can do it. Clear? So what will becomes here, either 4 cos cube theta minus 3 cos theta आएगा, cos inverse of इधर, तो it will be a cos inverse of cos 3 theta आएगा, cos inverse of 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Then it will be a cos inverse of cos 3 theta. You have to write the cos 3 theta formula is 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Then remains what, 3 theta. What is the theta value, 3 cos inverse x. Hence proved. Clear? So this is you have to do here. Clear? So hence proved. I hope it is clear. And you can try this too. वेरी इजिएस्ट। इधर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x इक्वल टू देखना पड़ेगा, इधर x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर, हाँ जल्दी। सो हियर यू कैन सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। थोड़ा सोच के देखो ना, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा। So 1 divided by tan square theta is nothing but tan theta, square root of tan square theta. 1 by tan theta will be cot theta. And here what you need to substitute? So 1 plus x square, वो किसका फॉर्मूला है, 1 plus x square, तो tan का है और cot का है, cot का यूज ही नहीं है, तो आप tan का ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर? सो नाउ द cot इनवर्स ऑफ 1 divided by x square minus 1 है ना, you have to simplest form, cot inverse of 1 divided by x square minus 1. They will not give anything through that like that. You have to find the simplest form, so you have to take the values. Clear? So now x equal to क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इधर, x equal to sec theta. Then sec theta equal to क्या हो जाएगा, sorry theta equal to sec inverse x. Clear? Same simple example. तो cot inverse of 1 divided by square root of sec square theta minus 1. We know that tan square theta equal to sec square theta minus 1. तो sec square theta minus 1 क्या आएगा, cot inverse of 1 divided by square root of tan square theta. Square root of tan square theta will be cancelled. Then cot inverse of 1 divided by tan theta. You know the reciprocal. What is that reciprocal? That cot inverse of cot theta आएगा. Why? Because tan theta equal to 1 by cot theta equal to 1 by tan theta. इधर क्या आएगा, theta. What is theta here? Theta will be sec inverse x. बस खत्म आपका आंसर। क्लियर? इधर देखो बाबा, ये समझेगा नहीं तो if you are not understood anything, just you can give the one message in comment box and I will once again I will explain you. So इधर देखो tan inverse of
स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² - 1 डिवाइडेड बाय x। ये तो सर 1 + x² का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, स्क्वायर रूट भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो 1 + x², 1 + tan², सो 1 + tan² फार्मूला है ना, सो 1 + tan² = sec² थीटा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ sec² थीटा है, तो स्क्वायर एंड सेकेंड विल बी कैंसल, स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल, again something will comes, so we have to use that formula, clear? So whenever you are using this formula, you have to know the values. So what we can substitute here, x is equal to tan theta, then x equal to tan theta है तो theta equal to क्या हो जाएगा, theta equal to tan inverse x. So replace the values, तो आप replace इधर करो और इधर भी करो चलता है, so replace tan inverse of square root of 1 + tan² theta -1 divided by tan theta. It is clear? So what is the 1 + tan² theta? That will be square root of sec² theta -1. What is tan theta? Sin theta divided by cos theta. Clear? And now tan inverse of, so sec² theta becomes sec theta and -1. Now tell me the denominator of the denominator comes to numerator. ये वाला denominator of the denominator क्या है इधर, cos theta. That cos theta comes to numerator, cos theta into cos theta. And you know already sec theta and cos theta are reciprocal to each other, then they will cancel. Then what will be the remaining here? That will be a tan inverse of 1 minus cos theta divided by sin theta. Clear? This is the main factor you have got like last. So to solve it further, what is the answer for next step for that one? That is nothing but tan inverse of 1 minus cos theta divided by sin theta. You know already the golden formula, 1 minus cos 2 theta is nothing but 2 sin² theta. Clear? And what about 1 minus cos theta? That is 2 sin² theta by 2. And what about sin theta, sir? Sin 2 theta का फॉर्मूला पता है ना, 2 sin theta into cos theta. इधर दो गोड़ा है तो इधर एक गोड़ा, इधर एक गोड़ा, सर एक ही गोड़ा है तो sin theta equal to 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. हाफ गोड़ा, हमको पुल आना चाहिए इधर दोनों ऐड करने के बाद. क्लियर? तो अभी इधर ए फार्मूला यूज करो एंड ए वाला फार्मूला यूज करो, ए वाला इधर यूज कर दो. सो tan इनवर्स ऑफ वाला कितना, 1 माइनस कॉस थीटा 2 sin² थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज sin थीटा, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2. एक वाला कैंसल, 2 वाला कैंसल, sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2 वाला डिवाइडेड बाय वाली, तो sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा बाय 2 वाला डिवाइडेड बाय वाली क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा हो जाएगा. तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, यू नो ऑलरेडी tan इनवर्स ऑफ tan थीटा विल बी थीटा, the answer will be theta by 2. So you have to remember what is the theta value. So what you are substituted in the theta value, x equal to tan theta, then theta will be a tan inverse x, 1 by 2 into tan inverse x. ये आपका आंसर, hence proof. This is your simplest form. Clear? So whatever it is, you have to know the answer. Clear? So now, so the 1 minute. So you can see the examples what you have solved. Okay, I hope it is clear. So now this example is clear. Now you can see the next example. Sec inverse of 1 divided by 2x² minus 1. So sec inverse of 1 divided by 2x² minus 1 है ना, ये फॉर्मूला में क्या सब्स्टिट्यूट करना है सर, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी इधर देखो आप, 2 cos² थीटा माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा. सो 1 by cos 2 theta क्या हो जाएगा, हाँ, that will be a sec 2 theta, reciprocal of that only you have to use here. So because of x equal to cos theta, then theta equal to क्या हो जाएगा, cos inverse of x. So replace the values. So sec inverse of 1 divided by 2 cos² theta minus 1, then it becomes what, sec inverse of 1 by cos 2 theta. Why? Because the cos 2 theta फॉर्मूला है ना वो 2 cos² theta
-1 क्लियर. सो sec इनवर्स ऑफ ये वैल्यू देखो 1 by cos 2 theta is nothing but sec 2 theta. Why? Because sec theta is equal to 1 by cos theta. Then sec inverse of sec theta क्या हो जाएगा 2 theta. So what is the theta value here? Cos inverse x. Then cos inverse x. In differentiation they will ask y equal to this and find the dy by dx. इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द this example. Clear? So now tan inverse of x divided by a square minus x square. सर ये तो जरा डिफरेंट ही लग रहा है. तो डिफरेंट ही है ना, तो डिफरेंट ही लगेगा. तो x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इधर ए स्क्वायर क्यों आया सर? तो ए स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा? देयर आर टू एग्जांपल्स हियर. द वन यू कैन टेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर and another one you can take ax divided by and also you can take ax divided by a square minus x square. That is also a very simple example you can take here. So no worries. So अभी इधर a square minus x square है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना? 1 minus cos square theta will be a sin square theta. So sin square theta डिनोमिनेटर में आया तो क्या हो जाएगा? cot theta आएगा. तो ये न्यूमरेटर में आपको क्या है? इधर tan इनवर्स है, इसमें tan थीटा आना ही चाहिए. देन ओनली यू कैन गेट द आंसर. बिकॉज ऑफ दैट x इक्वल टू वो भी आएगा. tan इनवर्स ऑफ cot थीटा है तो चेंज करके कुछ ना कुछ करके tan थीटा लेकर सकते हो आप, बट डायरेक्टली करो ना, आंसर आएगा. x इक्वल टू आप क्या करो? सो x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 1 मिनट, सॉरी नॉट चेंज द पेन. सो x इज इक्वल टू a cos थीटा नहीं सब्स्टिट्यूट करना, a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करना. तो a sin थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखो a सॉल्व करना पड़ेगा. 1 मिनट. सो कैसे सॉल्व करते देखो आप. x वैल्यू क्या है? x वैल्यू सब्स्टिट्यूट और फुट सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a sin थीटा एंड sin थीटा इक्वल टू x बाय a, then theta equal to sin inverse of x by a. These are the three values. sin theta का वैल्यू x by a, x equal to a sin theta. तो वही वैल्यू इधर रिप्लेस कर दो ना बाबा, तो क्या हो जाएगा? इधर रिप्लेस किया तो then it becomes tan inverse of sin theta divided by square root of a square minus a square sin square theta. So आप इधर a square इधर a square बाहर ले सकते हैं ना. So tan inverse of a sin theta square root of a square तो कॉमन रहेगा 1 minus sin square theta. So 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta. Clear? Then it will be a tan inverse of a sin theta divided by a square का रूट गया तो a square root of cos square theta आएगा. Square root of cos square theta is nothing but square और square root cancel, तो a cancel, sin theta divided by cos theta. It will be a sin theta divided by cos theta. Sin theta divided by cos theta किया तो क्या हो जाएगा? That will be a tan theta. Tan inverse of tan theta क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा बाबा. तो what is the theta value here? Sin inverse of x by a. This will be a, you can write here, sin inverse of x by a. The final answer is the simplest form, sin inverse of x by a. Clear? So simple example है, करना पड़ेगा बस. So इधर next example. So this is also very easiest. This is also very easiest. इधर tan 3 थीटा आना चाहिए, तो tan 3 थीटा कैसे आएगा? इसको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 3a स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर. क्लियर? 3 व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan क्यूब थीटा, ये आएगा. तो इधर आप देखो डिवाइडेड बाय क्या करना है, इधर डिवाइडेड बाय क्या करना है तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, वो वैल्यू मिलना पड़ेगा बस. तो आप x इज इक्वल टू और पहला डिवाइडेड बाय कर दो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आना चाहिए. एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आने के लिए क्या आएगा? सो बिकॉज देन ओनली यू कैन सब्स्टिट्यूट x बाय ए इज इक्वल टू समथिंग, देन ओनली विल गेट. सो आप इधर देखो 3a स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर. अब होल डिवाइडेड बाय ए क्यूब किया तो क्या हो जाएगा? देखो ए क्यूब किया तो 3x बाय ए बचेगा माइनस ये वाला एक्स क्यूब होना चाहिए. तो और 1 मिनट देख दो क्या हो जाएगा. सो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, 3 माइनस tan क्यूब थीटा नहीं आएगा, 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा ही आएगा. तो ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब 1 होगा
तो 3x² डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर हो जाएगा. देन हियर इट शुड बी ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ये वाले ए एक्स स्क्वायर है उधर, so you have to replace that question. So it will be a x square, then only it is a perfect. Clear? So now you have to take this question once again. That question is 1 minute. Tan inverse of 3a square x minus ax square divided by a cube minus 3ax square. Clear? So if you know the tan 3 theta formula, then only you can solve it. So इधर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय ए क्यूब टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो क्या हो जाएगा देखो, tan इनवर्स ऑफ 3a² x डिवाइडेड बाय ए क्यूब ax² डिवाइडेड बाय ए क्यूब होल डिवाइडेड बाय ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब 3x² divided by a cube. This is your solution. So tan inverse of a cube a square cancel हो जाएगा, 3x by a बचेगा, माइनस इधर क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, x divided by a square x square, this is nothing but whole square divided by 1 minus 3 a cancel, x square by a means what, that is nothing but tan square. 1 minute, x square 3 minus tan cube theta, 1 minute, x by a cube 3a x square, that will be 3x square divided by a square. तो इधर तो a नहीं है, वो x क्यूब ही है. क्लियर? ये वाला x क्यूब है, ये वाला भी x क्यूब है, ये नहीं है, a वाला भी x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब, इट विल बी x क्यूब 3 माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. क्लियर? ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. क्लियर? सो नाउ you have to substitute x by a is equal to tan theta. Clear? 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta आएगा बस. So ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x by a, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो. सो tan इनवर्स ऑफ 3 tan theta, इसका वैल्यू कितना, tan theta माइनस x by a होल क्यूब, that will be tan cube theta and whole divided by 1 minus 3 tan square theta. क्लियर? ये फॉर्मूला किसका है, tan 3 theta का, tan इनवर्स ऑफ tan 3 theta, आंसर क्या आएगा, 3 theta आएगा. theta is nothing but tan इनवर्स ऑफ x by, hence it is the simplest. इधर क्या करना पड़ेगा, इधर 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. You know the golden formula है ना, 1 minus cos x is nothing but 2 sin square x by 2, and 1 plus cos x also you know, that is 2 cos square x by 2. Then it is nothing but tan inverse of square root of 2 sin square x by 2 divided by 2 cos square x by 2. 2 cancel, square cancel, sin by x क्या हो जाएगा, sin by x क्या हो जाएगा, tan x by 2. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, x by 2. सिंपल है, बस 2-3 स्टेप में आएगा. क्लियर? सो x is belongs to 0 to 5, then it is a final simplest form. So now tan inverse of cos x minus sin x and cos x plus sin x. सर इधर क्या करना पड़ेगा, इधर तो tan इनवर्स है, अंदर cos x minus sin x है एंड cos x plus sin x, डिवाइड बाय क्या करना है, तो आप डिवाइड बाय cos x करके देखो ना, तो 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta आएगा. So you have to remember the one formula, that is nothing but tan 5 by 4 plus theta or minus theta. And what is the difference, the formula of tan of x plus y, that is nothing but tan x tan y divided by 1 minus tan x into tan y. In the place of x I am taking 5 by 4, ये क्या हो जाएगा, tan 5 by 4 plus tan y divided by 1 minus tan 5 by 4 into tan y. What is the tan 5 by 4 value, that will be 1 plus tan y. Clear? And here it is 1 minus 1 into tan y, so it will be 1 plus tan y divided by 1 minus tan y. So अब इधर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस आएगा, बस. क्लियर? यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, tan of 5 by 4 plus थीटा का फार्मूला क्या आएगा,
tan of 5/4 plus theta का, so 1 plus or minus tan theta divided by 1 minus plus or minus tan theta. Opposite sign, ऊपर क्या रहेगा और नीचे नहीं रहेगा. Clear है? So whatever the things are there here that you have to remember. So ये इक्वेशन को आप क्या करना पड़ेगा, divide by cos x in the tan inverse. Clear है? So that only you have to do here. So now see, substitute or divide by cos x to numerator and denominator of function. Clear? To the function tan inverse of cos x divided by cos x sin x divided by cos x whole divided by cos x divided by cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. देन यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x. क्लियर? एंड यू नो द फार्मूला. व्हाट इज दैट फार्मूला? tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 5/4. इधर ऊपर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस x. दिस इज आवर आंसर. तो 5/4 माइनस x, यू हैव टू राइट हियर tan ऑफ 5/4 plus or minus theta equal to 1 plus or minus theta divided by 1 minus plus or theta. You have to know that formula, then only can solve it. Clear? Easy simple example है बस. ये वाला देखो बाबा, ये वाला तो ये दो एग्जाम्पल है. ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिसलेनियस का. सो सर व्हाट इज 1 प्लस साइन एक्स. 1 प्लस साइन एक्स को क्या करना पड़ेगा, वो स्क्वायर रूट को कैसे निकालना पड़ेगा. यू हैव टू फोकस ऑन आउटसाइड द वैल्यू. कॉट इनवर्स है ना, तो कॉट इनवर्स है तो यू हैव टू फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अ कॉस का. टैन है तो द फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द टैन का. आप भी प्रायोरिटी देते ना आपका लाइफ में भी, तो ऐसे ही इधर भी करना पड़ेगा. सो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर 1. व्हाट इज 1? साइन स्क्वायर समथिंग प्लस cos square something, that will be the 1. And what is sin x formula? That is nothing but, you know na, sin 2x, that is 2 sin x into cos x. इधर 2x है तो इधर x x, इधर x है तो आपको पता है ना 2 sin x by 2 into cos x by 2. Clear? So like that only you have to use here sin square x by 2 cos square x by 2. Clear? So whenever you are using sin square x by 2 plus cos square x by 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1. What is the sin x value? The sin x value will be the 2 sin x by 2 into cot x by 2. Then आप ये 1 plus sin x को कैसे लिख सकते हैं आप इधर? So you can write in the short form of 1 plus sin x. You can write sin square x by 2 plus cos square x by 2, 2 sin x by 2 into cos x by 2. And what about 1 minus sin x? That is also sin square x by 2 plus cos square x by 2 minus 2 sin x by 2 into cos x by 2. ये वाला है तो 1 plus sin x you can write, that is a square b square plus 2ab. ठीक है नहीं, a square b square minus 2ab. So ये वाला है ना 1 minus sin x, इधर बाहर cot inverse x है तो इधर क्या लेना पड़ेगा आप, cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर लेना पड़ेगा. क्लियर? ये तो आप कौन सा भी ले लो, बिकॉज प्लस है ना मिडल, sin x by 2 प्लस cos x by 2 होल स्क्वायर, ये प्लस भी होल स्क्वायर. क्लियर? ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर. इधर आप a वैल्यू a स्क्वायर है ना, आप इधर लिखो इधर लिखो चलता ही है, बट इधर कॉट इनवर्स है ना बाहर, यू शुड बी राइट cos x by 2. क्लियर? दिस इज आवर सिंपलेस्ट फॉर्म टू फाइंड द फाइनल आंसर. So the remaining will be here, that is nothing but the main answer, that is you need to substitute the value cot inverse of square root of, इसका वैल्यू क्या लिखे थे आप इधर अभी, sin square x by 2 plus cos square x by 2, 2 sin x by 2 into cos x by 2. सेम वैल्यू भी इधर लिखना है ना, क्या लिखना है इधर, इधर भी सेम sin square x by 2 plus cos square x by 2 minus 2 sin x by 2 into cos x by 2. एंड होल डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, वही लिखना है. सो sin square x by 2 plus cos square x by 2 plus 2 sin x by 2 cos x by 2. मिडल क्या आएगा, माइनस. इधर भी सेम sin square x by 2
cos square x by 2 minus 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। सो अब इधर ध्यान से देखना पड़ेगा, a बाहर cot इनवर्स है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2। क्लियर है? सो अभी a वैल्यू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ sin x by 2 प्लस cos x by 2 होल स्क्वायर। मिडल क्या है प्लस, you should be take here cos x by 2 minus sin x by 2 because why, because sir you are saying that cos x by 2 and first you have to priority cos x by 2 because of whenever the minus sin x by 2 plus sin x by 2 cancel, cos x by 2 is in the numerator, cos by sin है तो क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, तो cot ही बाहर है ना बाबा, अंदर cot चाहिए, cot tan बाहर है तो अंदर क्या चाहिए tan चाहिए बस, तो इसलिए आपको बोल रहा हूं मैं। सो नेक्स्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी सेम स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, दिस इज अवर tan इनवर्स ऑफ सो सॉरी कॉट इनवर्स ऑफ। सो अभी आप देखो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, तो और एक बार देखो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2, अभी इधर क्या कैंसिल हो जाएगा साइन एक्स बाई सॉरी साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर cos x by 2 cos x by 2 cancel हो जाएगा। So what is the remaining answer? In this remaining answer will be cos x by 2 cos x by 2 will be 2 cos x by 2 divided by 2 sin x by 2, ये वाले क्या हो जाएगा 2 times sin x by 2, 2 to cancel, cos by sin आया तो क्या हो जाएगा that will be a cot x by 2, तो cot inverse of cot x by 2 क्या हो जाएगा x by 2, this is your simplest form। clear up, very easiest है, they will give in the competitive also, this will be a y, then find the this will be y, then find dy by dx at x equal to something, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कितना भी हो तो 1/2 ही हो जाएगा। सो दैट विल बी अ वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल। एंड नाउ tan इनवर्स है, इधर x है तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा इक्वल टू 5/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x है। क्लियर है? तो cos इनवर्स x एंड x इज बिलोंग्स टू माइनस 1/2 टू 1/2, सिर्फ इधर आप क्या करो cos थीटा सब्स्टिट्यूट करो और sin थीटा सब्स्टिट्यूट करो, कौन सा भी आएगा। क्लियर है? 1 प्लस कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो दोनों ऐड करके आप अगेन tan इनवर्स ऑफ tan पाई/4 माइनस थीटा आएगा। समझ रहे ना? सो आप इधर देखो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कॉस थीटा देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये वाला प्रूव करना है। तो tan इनवर्स ऑफ, ये एग्जांपल में बाहर cot इनवर्स x है तो बाहर cot इनवर्स x है तो क्या करना पड़ेगा, सो यू हैव टू रिमेंबर द sin x बाई 2 पहला लेना पड़ेगा। सो इन दिस एग्जांपल ऐसा नहीं है, x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करना है एंड x इक्वल टू एंड y इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर? So you need to remember. So it will be what? 1 plus x. 1 plus x means what? 1 plus cos theta plus sorry इधर माइनस है 1 minus cos theta divided by square root of 1 plus cos theta plus 1 minus cos theta. Already you know the golden formula. What is the golden formula? That is 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2 minus 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 and whole divided by, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू भी सेम है ना 1 प्लस cos theta 2 cos square theta by 2 माइनस ये वैल्यू भी सेम है ना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos theta दैट इज 2 sin square theta by 2 रूट 2 सब जगह में रूट 2 है ना, वो बाहर ले लो स्क्वायर 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 सब जगह में 2 है तो रूट 2 into cos theta by 2 root 2 sin theta by 2 divided by root 2 cos theta by 2
√2 साइन थीटा बाई 2। सो अभी इधर आप √2 सब जगह में है, कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा, सिर्फ cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। सो होल डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, इधर क्या करना पड़ेगा, तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। सो अभी बाबा इधर एग्जांपल था ना, वही एग्जांपल है ना ये वाला। तो ये है ना 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सेम ही करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या करना है इधर, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2। तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 किया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2 और टू न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस टैन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा आपके पास, टैन इनवर्स ऑफ फॉर्मूला है ना, टैन ऑफ 5/4 माइनस थीटा बाई 2, यही बचेगा। यस सर नो। तो ये टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा क्या आएगा, डब्बा ही आएगा। तो व्हाट इज द डब्बा वैल्यू, 5/4 माइनस 1/2 थीटा। क्लियर है। व्हाट इज द थीटा वैल्यू बाबा, दैट इज नथिंग बट 1/2 cos इनवर्स x, हेंस रूट। यही चाहिए ना आपको, यही चाहिए ना। सो इट इज अ सिंपल